हर हर महादेव। सबको मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? इस पॉडकास्ट में सबसे पहले आप सबको इनवाइट करना चाहूँगी महाशिवरात्रि के लिए। एक ऐसा दिन और ऐसी रात जिसके लिए हम पूरा साल वेट करते हैं, जब महादेव और शक्ति का आगमन होता है। इस बार कुछ खास ये भी है कि सिद्धि को 10 साल हो रहे हैं। हम 10 साल से सेवा कर रहे हैं और ये केवल महादेव के आशीर्वाद से हो पाया है। इन सब खुशियों को साझा करने के लिए आप सबको मैं निमंत्रण देना चाह रही हूँ। आप सब लोग 18 फरवरी को, जो कि शनिवार है, छुट्टी का दिन है, 1 बजे से ये महोत्सव प्रारंभ होगा, जिसमें कि बहुत ही आनंद आएगा। आई एम नॉट रिवीलिंग व्हाट ऑल विल हैपन, बट for sure we all will experience Shiva and Shakti's energy. We will all experience the unknown and the known coming together. And इसका जो वेन्यू है वो है B.R. अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर, जो कि जनपथ दिल्ली में है. So all of us will get together to celebrate Shiva and Shakti together. अब आते हैं मुद्दे पर. मुद्दे की बात यह है कि फरवरी का महीना है और बहुत सारे लोगों ने, जो मैंने नए साल में एक पॉडकास्ट डाला था, उसके बाद बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए, कुछ प्रेडिक्शंस सही हुई, कुछ और जानने की उत्सुकता हुई. तो आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जो कि आपको ध्यान में रखनी है. देखिए, फरवरी का महीना है. जनवरी के महीने में जब कुछ मैंने आपको ग्रह गोचर की बात की थी, तो सबसे पहले मैंने आपको ये भी बताया था कि जो प्रेडिक्शंस होती हैं वो एक स्टडी होती है, वो एक कैलकुलेशन होती है. और ग्रह गोचर यानी कि प्लैनेट्स जो कि हमेशा मूव करते रहते हैं. कुछ प्लैनेट्स 2 दिन में मूव करते हैं, कुछ प्लैनेट्स 20 दिन में मूव करते हैं, कुछ प्लैनेट्स 40 दिन में मूव करते हैं, और शनि जैसे प्लैनेट्स 2.5 साल में मूव करते हैं. So whenever we analyze the movement of these planets and their degrees and their nakshatras, we are able to give an analysis about how the universe is going to behave. इसी के चलते मैंने आपको बताया था कि 17 जनवरी को शनि ने गोचर किया. 2.5 साल बाद शनि जो है वो एक्वेरियस में गए, मकर से एक्वेरियस, यानी मकर से वो कुंभ राशि में गए. और इसीलिए मैंने आपको बताया कि किस तरह 7.5 का प्रभाव भी कम ज़्यादा होता है राशियों पर. उसके बाद जो प्रेडिक्शन थी कि कुछ प्राकृतिक आपदाएं होंगी और अप्रैल तक ज़्यादा होंगी, तो उसके लिए भी मुझे, जब सीरिया और टर्की में इतना जो आजकल नुकसान हो रहा है, उसके लिए भी आया कि प्रेडिक्शन सही थी. नेचुरल डिज़ास्टर्स हो रहे हैं. देखिए, प्रकृति बिहेव करती है, प्रकृति 5 तत्वों से बनी है, प्रकृति बहुत सेंसिटिव है, और जो प्रिडिक्शंस कैलकुलेशंस के हिसाब से की जाती हैं वो हमेशा सत्य उतरती हैं. इट्स लाइक अ गाइडलाइंस. तो हमें इन प्रिडिक्शंस को अपने लिए एक रोड की तरह इस्तेमाल करना चाहिए, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू आवर कार्मिक एक्टिविटी, कि हमें किस तरह से चलना है, कैसी सोच रखनी है. तो देखिए, फरवरी के महीने में भी आपको मिली जुली घटनाएं नज़र आएंगी. प्राकृतिक आपदाएं हो सकती हैं, बढ़ सकती हैं. इसके अलावा फरवरी के महीने में 3 ग्रह अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, जिसमें से एक सूर्य है, एक बुध है और एक शुक्र है. सूर्य जो है वो मकर को छोड़कर 13 फरवरी को कुंभ में जाएंगे. ही विल बी इन एक्वेरियस एंड ही विल जॉइन शनि इन एक्वेरियस. नाउ व्हेन 17th of January, when शनि moved to Aquarius, तो मैंने बोला था कि जिन जिन की राशि कुंभ है उनके लिए 7.5 का पीक आ गया है, उनको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है. अब इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, गौतम अदानी का.
अब आप देखिए कि इनकी भी राशि कुंभ है, और जैसे ही शनि का परिवर्तन कुंभ में हुआ तो इनके लिए किस तरह से प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जब शनि अपनी मार देते हैं कोई भी ग्रह, तो उनके लिए कोई छोटा बड़ा राजा रंक कोई मायने नहीं रखता। शनि is only karma, it is only a karmic planet, and all we have to be careful about is to do everything in a righteous manner. मीन राशि वालों को भी मैंने बोला कि आपकी 7.5 प्रारंभ हो चुकी है, आपको ध्यान रखना है। और काफ़ी सारे केसेस मुझे मीन राशि के भी आने शुरू हो गए कि जिसमें किसी ना किसी तरह परेशानियां शुरू हो चुकी हैं। तो अब जब फरवरी का महीना आ रहा है तो कुछ अच्छी चीज़ें भी होंगी, जैसे शुक्र गुरु के साथ मीन में जाएंगे तो मालव्य योग भी बनेगा। बिजनेस कम्युनिटी के लिए कुछ बिजनेसेस के लिए कुछ अच्छा वक्त भी आएगा टुवर्ड्स फरवरी एंड एंड मार्च। लेकिन ओवरऑल आई फील दैट द टाइम्स दैट वी आर ऑल facing and what we will face in future are going to be testing in some form or the other. As an individual, as a community, as a society, as a country, we will be facing some issue or the other. मैंने आपको कोविड के टाइम पे भी बोला था, कोविड ख़त्म हो जाने का मतलब ये नहीं है कि अब प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई, परिस्थितियाँ आती रहेंगी। ब्रह्मांड किसी ना किसी फॉर्म में हमें परिस्थितियाँ देता रहेगा। अब वो समय आ गया है। अगर कलयुग 4,32,000 सालों का है तो हम ये जान लें कि अभी कुछ चंद साल भी नहीं बीते हैं उसके, तो अभी तो यात्रा बहुत लंबी है। अब करना क्या है? क्या हम हमेशा डरते रहें कि अब ये ग्रह गोचर कर रहा है, अब ये ग्रह गोचर कर रहा है, अब यहाँ ध्यान रखो, अब वहाँ ध्यान रखो? नहीं, इन सब का सल्यूशन सिंपल है। हम सबको कहीं ना कहीं अब ये चेतना आ जानी चाहिए कि स्पिरिचुअल जर्नी कितनी इम्पोर्टेंट है। हमें अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू कर देनी चाहिए। आध्यात्मिक यात्रा यानी क्या? आध्यात्मिक यात्रा यानी ज्ञान में उतरना, यानी टू नॉट जस्ट एक्सपीरियंस लाइफ फ्रॉम अ सुपरफिशियल लेवल बट टू टेक अ लिटिल डीप डाइव। यू नो, जब हम स्विमिंग करते हैं तो 3 फुट में पानी में पहले सीखते हैं, उसके बाद धीरे धीरे 6 फुट में जाते हैं, 10 फुट में जाते हैं, और फिर एक दिन हम स्कूबा डाइविंग करने की हिम्मत भी रख सकते हैं। यही हिसाब है आध्यात्मिकता का। आध्यात्मिकता में हमें कहीं ना कहीं ये समझना होगा कि जब तक हम अपनी इस ज्ञान की जर्नी को, और ये ज्ञान क्या है? ये ज्ञान हमें जीवन को जीने की शैली बताता है। What is the righteous way to live? What has the ancient system of living taught us? That is called spirituality. A lot of people think that this is a very outdated subject and it's something which is not really talked about well, but it is so funny that I see कि जब हम कोई किसी से ये सुनते हैं कि आप यहाँ जाओगे तो वहाँ पे it's a trending place in spirituality and वहाँ जाते हैं तो सब मन्नतें पूरी हो जाती हैं, and then we see that वहाँ पे इतनी भीड़ लग जाती है that people just follow the trend of that particular person or that god man or that god woman or whatever, but they are devoid of gyan. Now what I mean by gyan is adhyan. What I mean by gyan is following the principles and the value system that the ancient guidance has left for us every day in our life. How we are eating, how we are thinking, how we are sleeping, when we are eating, when we are sleeping, everything is a part of spirituality. Nowadays, health has become a very major concern. And through this podcast, I would like to give a big warning, not just about physical health,
but also about mental health. The coming times are going to see a drop in mental wellness of an individual. There will be more cases of depression. There will be more cases of abuse, violence, anger, rage. Domestic violence will increase. And the reason for all this is that we are not able to keep ourself, our body, the 5 koshas that we are made of, aligned with the universe, aligned with the cosmic activity. So जब आप ज्ञान में होते हो, आपको सिखाया जाता है कि अपने आप को, अपने इस पिंड को हमें ब्रह्मांड के साथ किस तरह से मिलाकर चलना है. The key problem that I see, because of which people face issues in money, in health, in relationships, is that we don't know what we are doing, why we are doing, and how we are doing. There is so much of hunger, greed, enviousness, jealousy around all of us, competition, that we are not able to understand what are we supposed to do, how unique we are. And it is always about comparison with others. It's always about what he or she is doing and not about what we are supposed to do or designed to do in the first place. Lack of money is a pressing issue. But you will be surprised to know that ancient wisdom has always spoken about abundance. But the reason that people are not abundant, people are not able to pull money into their life, is because they don't know the energy which is required to pull that money. So ग्रह गोचर जो है, क्योंकि ग्रह भी इस ब्रह्मांड का अंश हैं, and people are misinterpreting astrology also, and that's the reason why sometimes when you misinterpret a subject, your expectations from that subject are very unreal. So astrology is a guiding tool. Astrology is able to tell you that this is how the universe is going to behave now, so you better align yourself. It's like saying that you will be sitting in a luxury car and you will not be able to experience the bumps or the speed breakers on the road. It's not because the road has been repaired. The road is bad, but it's because you are sitting in a luxury car. So it's more about your car. It's more about the vehicle. So if the vehicle is your body, if the vehicle is your mind, your intellect, and that is trained with Gyan, then however many bumps you have or breaks you have or issues you have, you will not be able to even feel disturbed. You will be in a state of balance because of spiritual guidance or spiritual Gyan or the Guru or whatever. So it is almost a mandate now to attach yourself and to completely immerse yourself in Gyan. Most of the people think it is about remedies. It is about these quick solutions. And that's the reason, we spend most of our time on Facebook and Instagram listening to the influencers and listening to these weekend astrologers and tarot card readers who are telling you to do this and do that and light this and light that. I hope this was that simple. The world would have been a much abundant and a happier place. But unfortunately, this is not how it works. You have to understand the depth. You have to understand the equation. You have to understand what is going wrong and what is it that you have to fix. Remedies, in a way, and these quick fixes that you do in your life are just psychologically satisfying you. It's like a placebo effect. But then after some time you realize things are back to square one. If you want to know the real values, if you want to know what is really hidden, if you want to know everything, make sure it is revealed to you. Because only the fortunate
can actually get a real guru in their life, and only the more fortunate can learn from a guru. So getting a guru in your life is great, but to be able to follow a guru, to be able to surrender to a guru is the greatest. So I am putting a word of caution here for everybody, and I am saying that whatever changes are happening, because when things happen, I talk to all of you in satsangs or in podcasts, and when things happen the way the calculations have turned out, it's almost like a validation of the fact that yes, calculations work. But you should not be very overwhelmed that दी आपने जैसा बोला वैसा हो गया, या माँ आपने जैसा बोला वैसा हो गया. It's not about getting overwhelmed with my prediction, but it's about time now that you understand that whatever calculation is giving you makes a lot of sense. So you must follow the calculation. You must follow the journey that probably I'm trying to put everybody on. So I am still predicting that the coming times are not going to be that easy, especially with Shani now going into Aquarius. And I did tell you the story about Shani and Sun, and now they're going to be together. So they are bound to bring issues on every level. और अगर अदानी को भी issues आ सकते हैं तो आप सोच सकते हो कि देश को अगर कुछ ऊंच नीच हुई तो हमारा देश कितना सफ़र करेगा. सो अपना ध्यान रखिए, फॉलो करिए, अपने आप को आध्यात्म से जोड़िए. Give yourself this gift of a couple of hours of a satsang or a spiritual workshop or a discourse. And that's the reason why I'm saying that all of you come for Mahashivratri. Experience the presence of Shiva and Shakti. What happens when the material world and the spiritual world come together? I think the biggest gift that we all have is this path where the spiritual and the material meet with utmost grace. So all of you take care of yourself. आगे आने वाले महीनों तक अपना ध्यान रखिएगा. एक के बाद एक ग्रह अब गोचर करेंगे. They will change their rashis. They will be in comfortable and not so comfortable places as well. But for a person who is driving a luxury car, he should not worry. So for a person who is secured by the Guru, by Gyan, by God, he should never worry about any bumps on the road. So thank you very much. जल्दी आपसे मिलूंगी महाशिवरात्रि पर. तब तक हर हर महादेव.